It's gonna be an exciting video today. आज हम हमारा डाइनो टेस्ट करेंगे, साथ साथ में अलग अलग चीज़ें भी टेस्ट करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो there is this Activa 6G on the dyno. So we're gonna do a dyno run of this और देखते हैं कितना पावर निकालती है, right? We have the figures from factory. अभी एक्चुअली ड्राइव ट्रेन लॉस के बाद ऑन द व्हील्स कितना पावर हमको मिलता है। सो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट। .14 bhp. हमने अभी ये एक्टिवा का डाइनो रन किया है एंड द पावर इज़ अराउंड 6.14 bhp. व्हील टॉर्क इज़ 12. अभी व्हील टॉर्क ज़्यादा आ सकता है, क्यों? बिकॉज इट हैज़ गियर्स, मतलब इसके अंदर तो CVT है, तो उसकी वजह से जो इंजन टॉर्क नहीं है, दिस इज़ व्हील टॉर्क. एनीवे, मैक्स पावर इज़ 6.14 एट द व्हील्स. मतलब अभी लेट्स चेक आउट व्हाट इज़ द फैक्ट्री स्पेक. तो फैक्ट्री में आई थिंक किशन इज़ जस्ट चेकिंग ऑनलाइन के 6G का पावर कितना है. शुड बी अराउंड आई थिंक 9 bhp, 8 bhp, 9 bhp, राइट. तो नाउ जैसे मैंने बोला ड्राइव ट्रेन लॉस, तो विद दिस अपना जो इंटरनल कंबर्शन इंजन है उसमें ड्राइव ट्रेन लॉस बहुत होता है. लाइक इसके अंदर CVT है, फिर अपना इफ़ यू टेस्ट द बाइक्स के अंदर गियर्स वगैरह होता है. हाँ, 7.84 इज़ द फैक्ट्री bhp. तो 7.84 का अगर 20% करेंगे, लेट्स डू अबाउट 20%, क्योंकि 7.84 माइनस 20% इक्वल टू 6.27 और अपना 6.14. सो इट इज़ राइट ऑन द मनी. मतलब एकदम एक्यूरेट है अपना डाइनो. इट्स लाइक 0.2 bhp. सो इट्स डिफरिंग बाय जस्ट 0.1 bhp. तो आवर डाइनो इज़ रियली एक्यूरेट. दैट्स रियली एक्साइटिंग टाइम्स. अभी दूसरी बाइक टेस्ट करेंगे. वी हैव अ नॉर्मल सुजुकी MAX100, उसको टेस्ट करेंगे. फिर आवर पोर्टेड सुजुकी समुराई, उसको टेस्ट करेंगे. ऑब्वियसली पोर्टेड आपने सुजुकी समुराई वर्सेस RX135 का वीडियो देखे, इट्स द सेम बाइक, उसको टेस्ट करेंगे. सो लेट्स गो, गेट ऑन विथ आवर नेक्स्ट बाइक. आवर सेकेंड कैंडिडेट इज़ द MAX100. ये स्टॉक MAX100 है. सो लेट्स सी हाउ मच पावर दिस बाइक मेक्स.
फर्स्ट पुल हमने किया, इट्स showing 4.5 bhp and the top speed is about 89 km/h. अभी second run करेंगे. We'll take average of 3 runs to understand, you know, what kind of power it is making. So we did a few pulls और सब में the power figures are consistent. It is around 4.2 bhp. We did a few pulls. We did a third gear pull और fourth gear pull और सब में the power figures at the wheel are consistent at around 4.2 bhp. हम एक और run करेंगे. Right now Kishan is in fourth gear. Alright, so let's do one more pull in fourth gear. Let's go, Kishan. Consistent result around 4.2 bhp, 4.1, 4.2 इसके आजू बाजू hover कर रहा है. This is a stock bike, obviously drive train losses वगैरह वगैरह. So factory it has about 7 bhp, right? अभी ये बाइक पुरानी हो गई है, so 1-2 bhp तो वैसे भी कम हो गया, plus you know the drive train losses. So we are getting 4.2 at the wheels, means समझ लो ना आप around 5-6 bhp, you know, that's what we are getting at the engine. अभी इसका piston, you know, is, I don't know, you know, how old the piston is, because we bought this bike just to, you know, work on it, और फिर हमने कुछ change नहीं किया. You know, piston is also old, everything is, you know, as it is, you know, it's stock. Now we're gonna test our ported bike, which is the Samurai. So let's go test that crazy by the mighty Samurai. 13 bhp at the wheels. Top speed इतनी रही है, top speed is 100. We stop क्योंकि फिर power नहीं बढ़ रहा, so there is no point, you know. In the end we will just get a higher top speed, but we won't get more power. So Kishan, you know, stop giving more throttle. But we're gonna do a few more runs and let's see how it does. Third gear कर. Is going to do a third gear pull. Let's see what power
crazy. We didn't expect it to make so much power. It's making around 12 bhp at the wheels. Matlab, you know, at the crank it is making around 14 bhp. You know, we did calculate के इतना expected power होगा, which would be around, you know, 13 to 14 bhp, but it is actually making 14 bhp at the crank. Abhi, you know, this bike has a new piston. We have done the engine work, so obviously, you know, it is in mint condition, and you know, the 4mm plate, and you know, it is not even running a 22mm carburetor. मतलब ये फैक्ट्री 18mm कार्बोरेटर पे चल रही है, एंड इट इज़ मेकिंग 12 bhp एट द व्हील्स. दैट इज़ लाइक क्रेजी पावर फिगर्स. वी वांट टू डू अ फ्यू मोर टेस्ट रन्स. कार्बोरेटर का थोड़ा लीन रिच, इसमें क्या पावर डिफरेंस आता है वो भी हम करेंगे. बट लुक एट दिस 12 bhp, क्रेजी. दिस वॉज अ थर्ड गियर पुल, but fourth gear also, you know, gives the same result. खाली थोड़ा difference ये रहता है कि how the transmission is. तो थोड़ा like, you know, there are more gears or bigger gears involved, तो थोड़ा power loss इधर उधर, you know, 0.5 bhp here and there, and you know, that's the only difference you'll get, you know, from a third gear pull to a fourth gear pull. Crazy pulls from the Suzuki Samurai. अभी जैसे जैसे हम ज़्यादा पुल करने लगे, पावर ड्रॉप होने लगा, क्योंकि आई थिंक, यू नो, द बाइक इज़ ओवर हीटिंग. सब गर्म हो गया. हमने फ़ैन नहीं लगाया. यू कैन सी देर इज़ नो फैन, देर इज़ नो वेंटिलेशन. तो फर्स्ट वी डिड अ पुल ऑफ, you know, it was making around 13 bhp. Then, you know, it came down to, I think, 12, फिर 11 point something. Then, you know, the last pull was around 10 bhp. So I think, you know, we need a big fan to keep the bike cool. Activa का भी जब हमने रन किया था, Activa was also getting really hot. So it needs some air, you know, going, थोड़ा कुछ RAM air जैसा अपने को चाहिए. So we're gonna put a fan and then do more dyno pulls. Yeah, I wanna do the twin. We'll be doing the twin soon. But first thing we need to fix is the fan. That's it for this video. We will be coming with more bike videos. सब अलग अलग बाइक हमारी टेस्ट करेंगे. Shogun, then we have the RXZ, we have the ported 135. You know, that's going to be crazy. We are expecting it to be more than 20 bhp. So I hope, you know, it is more than 20 bhp. या सो, और ट्विन ऑब्वियसली, यू नो, ट्विन हम लास्ट के लिए रखेंगे, मगर उसके पहले फ़ैन लगाएंगे. सब थोड़ा अच्छा सा एनवायरनमेंट बाइक के लिए, सो हम कुछ तोड़ फोड़ ना दें. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. I'll see you in the next.